नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, खास मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। भारत का स्टार्टअप हब बैंगलोर शहर आजकल एक बड़ी क्राइसिस में है। लगभग 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ये शहर हर रोज 20 करोड़ लीटर पानी की कमी झेल रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर उन इलाकों में पड़ा है जो पहले गांव थे और 2007 में शहर का हिस्सा बने। पानी की इस किल्लत के चलते नगर निगम ने भी कई एक्शन लिए हैं, नए नियम लेकर आए हैं, नई पाबंदियां जारी की हैं। इस जल संकट में बैंगलोर शहर की इमेज खराब हो रही है, लेकिन ये संकट ओवरनाइट नहीं आया है। पानी की समस्या आएगी, इसके आसार कुछ सालों से मिल रहे थे, लेकिन नियमित प्लानिंग की कमी से इस शहर का ये हाल है। और बैंगलोर ही नहीं, मुंबई जैसे शहर में भी कई दफा हम वो वार्निंग सुनते हैं कि इस साल नहीं तो अगले साल पानी की कमी आ सकती है। ऐसे में इस इंपेंडिंग क्राइसिस का कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है या नहीं, इस पर हमारी नजर है। और आज मेरे साथ कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जुड़ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी की मदद से ये क्लाइमेट क्राइसिस के प्रभाव को रादर कम करने में लगे हैं। बैंगलोर की बेस्ड उरवू लैब्स के को फाउंडर वेंकटेश आरवाई हमारे साथ हैं, मुंबई के ही ओमसैट के फाउंडर रिद्धेश सोनी और इसी क्लाइमेट चेंज में पैसे लगाने वाले वेंचर कैपिटल फंड स्पेशली इन्वेस्ट के पार्टनर अर्जुन राव इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट वेंकटेश, शुरुआत आप ही से, कंसिडरिंग यू आर इन द हब ऑफ ऑल द एक्शन, और क्या स्थिति है इस समय बैंगलोर में? इफ यू कुड जस्ट फिल अस इन, have things become better or they're just turning for the worse? I think Bangalore is slightly, if you look from the past, it is going towards the worst, but that is still not too late to, like fix things up is what I would say. Like this is the first time we are facing an issue as like a water crisis in Bangalore. Now that what is happening is like with little bit more of global warming and the rain patterns having a little bit change and everything is affecting and overpopulation and everything is contributing towards like making it worse. But we can always look into how we can tap this potential and see the positive way how we can take the civilization forward. You have to learn from our mistakes. रिद्धेश, आप इस क्राइसिस को कैसे देखते हैं? ये बैंगलोर जैसी विपरीत स्थिति बनेगी क्या दूसरे शहरों में भी? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इस स्पेस में? So I have a different approach to this kind of the root cause of such kind of a problem. जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, जैसे such districts like Marathwada, where 8 districts of Maharashtra which are severely facing drought crisis because of the drought, because of the water scarcity, there is a food crisis. Because of the food crisis, there is a migrational crisis. So the sudden influx of rural population into the urban areas is the major reason why the water utilities are not able to cope up with the additional demand of influx of population that is taking place. So ये rural to urban migration population is the first problem that needs to be countered. Okay, rural to urban, but basic problem यही है कि सालों से मराठवाड़ा जैसे इलाकों में पानी नहीं है, तो वहाँ पर वो ऑफ कोर्स सीजनैलिटी का इम्पैक्ट हो सकता है, उसे भी एड्रेस करने की जरूरत होगी। अर्जुन, टाइम इन ऑन दिस। ये सिचुएशन आप लोग एज अ वेंचर इन्वेस्टर जो इस पूरे सेक्टर में काफी अग्रेसिवली पैसा लगाते हैं, इज इट एन इम्पेंडिंग क्राइसिस और अ बिगर अपॉर्चुनिटी जहां पर काम किया जा सकता है और बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, इस डिस्कशन के लिए। सारे लार्ज सिटीज की ये प्रॉब्लम है जहाँ पे डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई इज वेरी वेरी हाई बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, लेकिन सप्लाई हमारी घटती जा रही है क्योंकि हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं विदाउट सस्टेनेबिलिटी, राइट? तो हमारा ये शुरू से मानना है कि ये सिचुएशन को संभालने के लिए हमें इनोवेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, और इसलिए एज स्पेशली एज अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हम चाहते हैं कि हम अलग अलग इनोवेशन आइडियाज पे फोकस करें जो ऐसे सिचुएशंस को मिटिगेट कर सके, राइट? तो इसी कारण से हमने वी वर वेरी अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स इन उरवू, राइट, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। और जो सिचुएशन है आज जो बैंगलोर में ऑब्वियसली दिख रही है, लेकिन जो हमें पता है कि अगले 5 सालों में 10 सालों में काफी पार्ट्स ऑफ द कंट्री और दुनिया में ये प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्वियसली कमर्शियली एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सॉल्यूशन ढूंढे इस क्राइसिस की, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है।
और इसीलिए हम ऐसे सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी हाँ, और इनफैक्ट टाइमली वो होता दिखाई दे रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे भी ध्यान में आई है कि पिछले साल और इस साल जब हम तुलना करते हैं कि कितना फंड फ्लो आया, किसमें कितना पैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्लाइमेट टेक में भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है काम करने की। तो अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों रिद्धेश और वेंकटेश, हाउ आर यू रियली एड्रेसिंग दिस क्राइसिस एंड हाउ कैन यू हेल्प इन द फ्यूचर? वेंकटेश, मुझे बताइए, और वो एग्जैक्टली करती क्या है? क्योंकि जब मैं आपके कंपनी के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ना एक बहुत ही साईफाई मूवी या फिर किसी सीरीज का ध्यान आया कि आप हवा से पानी बना सकते हैं। ये कब काम शुरू हुआ और कितनी सक्सेसफुली हो रहा है? Right. So, like little history, like we started this journey when we were in 2016. Like thought of okay, like why we started this when we were in college in Kerala. Like we faced a crisis in Kerala. Like there was no water for 3 months, and we had to be limited with just 10 to 15 liters on per day basis, and like tractors will come and fill the water. So that situation happened to Kerala, and that was like an awakening step for us. Like if this can happen in Kerala, which we all say God's own country, and it's one of the most humid and most rainfall bound area, and then think of every other places in India, or not just India. In fact, explore, like if you look at the global place, then everywhere this crisis is going to happen. So that's when we started thinking, what could be the alternative source for it. Like one of the major resource now we are completely relying on is groundwater, and we know with the more population and everything that's going to happen, and we are going to be increasingly depleting the resource. So what could be the alternative source? So at that time when we looked up and we were researching more, and we found water as air, atmospheric air, as one of the best resource, which has a lot of moisture, which can be tapped for drinkable water or any other use cases. So if you look at just air itself, it contains around globally 13,000 trillion liters. Like if I have to put an image to it, it is roughly 6 times all the rivers in the world combined, including Ganges, Niles. It is such a large amount of water that is just we are not able to see it. Imagine like if there is a if we are having a crisis in Bangalore, let's say, and there are like multiple other Kaveris, which is just not being visible to us. That is what we are looking into, tapping it, and how we can reduce the cost of conversion of, like when we take water from air, it is in a gaseous phase, and we need to convert it into a liquid phase. Correct. So there is a small game that we have to play there. Now the whole idea of our company is to bring that energy level to the lowest possible and increase the amount of water that we can take at any point of time. So these are the two missions we are looking into. इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन क्या एक लॉन्ग टर्म, एक नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर इनके सॉल्यूशंस काम आ सकते हैं या नहीं, उस पर होगी बातचीत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और आज हमारी नजर है बैंगलोर की वाटर क्राइसिस पर। और बैंगलोर की वाटर क्राइसिस में कुछ कंपनियां हैं जो शायद निभा सकती हैं अपना रोल, आगे इस तरह की स्थिति देश या फिर किसी शहर में ना आए। बेंगलोर की ही उर्वू लैब्स के को-फाउंडर वेंकटेश हमारे साथ हैं, मुंबई के ओमसत के फाउंडर रिद्धेश सोनी, और साथ ही इस सेक्टर में यानी कि क्लाइमेट चेंज में बड़े पैमाने पर निवेश करने वाली फर्म स्पेशली इन्वेस्ट के अर्जुन राव से हम कर रहे हैं बातचीत। रिद्धेश, ओमसत एग्जैक्टली क्या करता है? आप लोग सैटेलाइट इमेजिंग के मदद से दरअसल आइडेंटिफाई कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज। अब बैंगलोर जैसी स्पेस में ये इस तरह की टेक्नोलॉजी कहाँ काम कर सकती है? So, when I was working with the Indian Space Research Organization as a scientist, I was tasked with finding water on the moon, चांद पे पानी ढूंढना. So, using the same motivation behind the technology that was used to discover water on the moon by the Chandrayaan-1 lunar mission of India in the year 2009, I said, consider the moon to be an arid place, and using the satellite technology which can have the subsurface water penetration capacity and the technology that can isolate the subsurface water signals, why not use the same technology for finding underground water resources? So as far as Bangalore is concerned, only relying on groundwater and finding those aquifers, discovering new aquifers won't make a big difference, because the population influx is something that is not under control. But
one lesson that I learned from FGG Elbe, the German company that actually solved the crisis in South Africa, is that they built a catchment, decentralized catchment areas in and around different blocks of the city. And all the storm water that was coming from the rainfall, they put all the water, collected that water in a space and injected all the water into the subsurface. Because exploitation and conservation should go both hand in hand. You cannot say just I will go on exploiting or just go on consuming. So this is one strategy that could be applied for the Bangalore city. And secondly, in India, water is free. So unless you charge that water and people are accountable to get it. So for example, when we had gone in Denmark, the cost of 1 meter cube of water is 9 euros because all the water that they use in building is recycled. In Copenhagen city, they have around 4,000 water treatment plants in buildings. So they recycle the gray water and again use it for drinking purposes. So this investment can only come once this free water is converted into revenue water, and the utilities can further put R&D money for such kind of infrastructure. अर्जुन, मैं आपसे ये फिर समझना चाहूंगी, इस तरह के सिनेरियो में जहां पर हमारी स्टार्टअप्स काम कर रही हैं, ये क्या बड़े स्केल में मॉडल्स इवेंचुअली काम में आएंगे? जो एग्जांपल्स रिद्धेश ने दिए, अब कोई छोटी कंपनी ही शायद डेनमार्क में काम कर रही होगी या फिर जर्मनी में काम कर रही होगी और फिर लगा कि हमें एक मौका है तो उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या वो भारत में आप होता देखते हैं? क्योंकि आप लोग इनफैक्ट कई सारे ऐसे कंपनियों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको बैक करते हैं। ऑफ कोर्स यू आर सीइंग अ पोटेंशियल इन देम, बट कैन दे एड्रेस द प्रॉब्लम एट स्केल? नो, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। और हमारा ये डेफिनेटली मानना है कि ये सारे इनोवेटिव स्टार्टअप्स जो हैं, जो रिद्धेश कह रहे हैं, जो वेंकटेश कह रहे हैं, इन सब में बहुत ही क्षमता है, बहुत ही पोटेंशियल है कि ये इनोवेटिव सॉल्यूशन पहले बनाए जो बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे और फिर इस सॉल्यूशन को स्केल भी करे, राइट? क्योंकि स्केल के बिना ना बिजनेस सस्टेनेबल होता है, ना ही सोशल और ओवरऑल इकोसिस्टम को इम्पैक्ट होता है। जबकि ये शुरू करते हैं फाउंडर्स के आइडिया के साथ और 2 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ, बट इन्हें हमेशा सोचना जरूरी है कि ये कैसे लाखों लोगों और करोड़ों लोगों के लिए इम्पैक्ट कर सके। और आई थिंक हमने जो देखे हैं इन दोनों स्टार्टअप्स, ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टार्टअप्स है, इनके हमेशा जहन में रहता है कि ये लार्ज स्केल इम्पैक्ट करे। मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि इस तरह के इनोवेशंस आगे एक बड़े पैमाने पर बदलाव लाएंगे। तो उर्वू में आपने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं। वेंकटेश, कैन यू टेल अस what kind of projects, who is using Urvu services at this point in time? So at this point in time, we are mostly working with industries. Like it's not just the consumers who are affected with the water crisis. Like similarly, there are offices, there are commercials, there are industries which are also equally affected by the water crisis. So we are starting with the industrial applications. We are working closely with beverage industries to start with. We have done a couple of pilots with some bigger brands, and also what we are doing is also we have our own plant where we make water, and we are collaborating with hospitality sector like restaurants, hotels, which are consuming a lot of water, are now completely converting into a renewable water. Like we will be serving our water to them. ओमसत के क्लाइंट बेस क्या रहेगा? आप क्या कंसिडरिंग यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी का काफी बड़ा योगदान है, तो क्या क्लाइंट्स प्राइमरीली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर अब निजी प्लेयर्स भी आप लोगों के साथ काम कर रही है रिद्धेश? So currently we are working with 3 ministries on a B2G model: Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Water Resources, and Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. So as we know that water is a state subject, so the pipeline water is controlled by the government. But when you talk about the users, that is these are the farmers, farmer producer organizations, NGOs, self-help group, cooperative societies, industries, as well as household users. So we have one model to deal with B2C and one model to deal with B2G. So currently in terms of the smart cities that we are currently working on, till date we have worked with 4,000 diverse stakeholders and created around 3,800 water points. तरफ उर्वू ऑफ कोर्स निजी क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है और आप इनफैक्ट सरकार के साथ मिलकर इस क्राइसिस को एड्रेस कर रहे हैं। अब अर्जुन, आई एम श्योर आपने भी एक कई तरह की कंपनियों के साथ बातचीत की होगी और आपने जैसे मेंशन किया कुछ और निवेश भी किया है। टेल अस हाउ एल्स कैन दिस प्रॉब्लम बी एड्रेस्ड
दूसरी कंपनियां और क्या कर रही हैं जो शायद बैंगलोर जैसी प्रॉब्लम को इफ नॉट इन द नियर टर्म लॉन्गर टर्म में रिजॉल्व कर सकती है, सोल्यूशन लेकर आ सकती है? जी, आई थिंक हम काफ़ी कंपनियाँ देखते हैं जो इस डोमेन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम कर रही हैं, टू कम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि कोई भी एक सिंपल सॉल्यूशन का इसमें कोई रामबाण नहीं है ना? तो आई थिंक water from air is a very innovative solution from Uravu. We are seeing wastewater treatment as solutions. How do you do that? How do you do better rainforest harvesting? How do you do desalinization? Because the oceans and the seas have a rich source of water, but can we use it for potable uses? And then how can industries, particularly that consume high amounts of water, how can they conserve water, right? The other, जो दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि measurement, जो of course ओमसैट ने भी बात की, रिदेश ने भी, in terms of जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, तब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ। तो बहुत सारे IoT बेस्ड और सेंसर बेस्ड एप्लीकेशंस आ रहे हैं that are helping us consistently monitor and track के हमारा यूसेज किस लेवल का हो रहा है, either as a consumer or as a business. यहाँ से what is your future? वेंकटेश, what is the future for Uruvu? अगली बार जब हम आपसे बातचीत करेंगे, what would you have perhaps achieved? So, like the future we are looking at is right now we start from the one industry, let's say beverage industry, and we try make them renewable. Like we are bringing a new category called renewable water, like water which is can be taken as quick as possible, right? And slowly we will be extending it to all the other industries. Currently, let's say the cost of water when we are using electricity, it comes around 5 rupees. But when we can move it, shift it to solar, it can come down to 2 to 3 rupees. And then if we shift it to waste heat, like which is the industrial waste heat, then the cost can come down to 1 to 2 rupees. And in further development and innovation that we have in pipeline, we are seeing that this water can also extend to come to a consumer level, where the consumer can have an insurance that they are going to have water for sure. Quite interesting. रिदेश, ऐसे कोई खास टारगेट्स आपके लिए? So in the future, we want to become a decentralized catchment management agency where not only finding the source of the groundwater, but also incentivizing our users, such as the farmers, so that they can also look into not just going for borewell, but also creating such recharge structures and incentivizing them to get the recharge structures without, relying more on the government subsidies. So this kind of an approach, which will give them a longer sustainability. If we empower the farmers, then the rural to urban migration will get stopped, which will eventually lead to a better future for the smart cities and lower the amount of burden that is currently on them at present. अर्जुन, टू कंक्लूड दिस, मुझे बताइए आप कितना और पैसा स्पेशल की तरफ से इन्वेस्ट होता देखेंगे क्लाइमेट टेक में? इज इट परहैप्स अ प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम, और सिर्फ आप ही के लिए नहीं, बट द होल VC कम्युनिटी एज अ होल इन इंडिया? जी, डेफिनेटली हमारे लिए और VC कम्युनिटी के हमारे और पीयर्स और दोस्तों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्टिकल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है कि काफ़ी फंडिंग इज बीइंग एलोकेटेड टू दिस सेक्टर टुडे एज वेल एज फ्यूचर लुकिंग। हमारा जो अबाउट $60 to $70 million का के फंड्स हैं, उसमें से हमारा काफ़ी योगदान है towards climate tech. I would say anywhere in the tune of 30% or 30 to 50% among all the deep tech areas that we focus on can go into climate sustainability and energy related areas, which are super critical for all of us. And we have consistently seen other funds also add allocations within their funds. So we need the larger funds with bigger pools of capital to also increase allocations, which we are seeing consistently. It is a problem of now and today. And what we want to leave is a better future and a better planet for, the next generation. So it's super important that all of us collectively invest in this future. I truly agree. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए and being a part of this conversation. Good luck to all of you. Thank you so much. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे थे, पानी की, और हमें सब को ये प्रण लेना है कि हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे और इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। लेंगे एक ब्रेक, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।